स्टार्ट करते हैं आज से चलते जो फुल टेस्ट हुआ है फुल सिलेबस में था। फर्स्ट नंबर MCQ which of the following is found in plant cell but not in animal cell? So ऑप्शन सी सेल वॉल प्लांट सेल में होता है। MCQ 2 पे आते हैं। A plant cell placed in a distilled water becoming turgid due to the presence of सेल वॉल की वजह से जो है वो टर्जिड हो जाता है क्योंकि वो बर्स्ट नहीं होता। एनिमल सेल जो है वो फिर गलाइसिस हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 है which organelle is involved in photosynthesis and only found in plant cell? हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4th नंबर MCQ पे आते हैं। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। 5th MCQ पे आते हैं। which structure help plant cell maintain their rigid shape? So सेल वॉल की वजह से होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 6 पे आते हैं। which of these is usually larger in plant cell than animal cell? सेंट्रल वेक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में लार्जर होता है और एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल छोटे होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7 पे आते हैं। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। सो ऑप्शन B is correct. 8th पे आते हैं। The process of photosynthesis occur in plant cell because they contain chloroplast इसमें होता है। So option B is correct. 9th नंबर MCQ पे आते हैं। In a typical plant cell which organelle storage nutrient in waste product and helps maintain turgid pressure? Central vacuole जो है उसका काम है। So option C is correct. 10th पे आते हैं। Why are lysosomes more prominent in animal cell than a plant cell? Because animal cell use them for digestion and waste removal के लिए उसको यूज करते हैं। So option B is correct. 11th पे आते हैं। Which property of water allow it to dissolve many substances due to its polarity की वजह से होता है। So option B is correct. 12th पे आते हैं। Why is water considered as a universal solvent? So option C. It dissolves more substances than any other liquid. So option C is correct. 13 पे आते हैं। What allows water to have a surface tension? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है सरफेस टेंशन और बाकी जो बॉन्ड है उनकी वजह से नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 पे आते हैं। आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस बिकॉज आइस हैज अ लोअर डेंसिटी देन द लिक्विड वाटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई वाटर कैन मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो असल में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 व्हाट मेक्स वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू ईच अदर ड्यू टू इट्स कोहेसिव फोर्स? 17 व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ? इट फैसिलिटेट्स बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 which of the following is not a property of water? हाइड्रोफोबेसिटी, वाटर को रिपेल करना सुइस की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19 कैपिलरी रिएक्शन इन अ प्लांट इज पॉसिबल ड्यू टू कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 21 पे आते हैं। which of the following factor does not affect enzyme activity directly? DNA सीक्वेंस ऑफ एंजाइम जीन इसके साथ ताल्लुक नहीं रखता, बाकी पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन की वजह से होता है। 22 पे आते हैं। एंजाइम एक्टिविटी जनरली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर अप टू सर्टेन पॉइंट. What happens if the temperature goes beyond the optimum? So enzyme is denatured. So option B is correct. 23rd, why does extreme pH reduce enzyme activity? Because it alter the active site. So option C is correct. 24, what effect does a high substrate concentration have on enzyme activity? Assuming enzyme concentration is constant, so obviously enzyme activity increase होगी पहले, फिर उसके बाद जो है ये लेवल स्टॉप हो जाता है. So option B is correct. 35. What factor is most likely to be cause of permanent loss of enzyme activity? Extreme heat की वजह से. So option C is correct. 26. Competitive inhibitor affect enzyme activity. तो competitive inhibitor हमें पता है कि enzymes के active sites पे अटैच होता है. Option B is correct. 27. What happens to the rate of enzyme activity when enzyme concentration increases? If substrate is unlimited, so obviously reaction जो है वो increase होगा. So option B is correct.
28. Non-competitive inhibitor reduce enzyme activity by changing enzyme shape. So option C is correct. 29. Enzymes are most active at their optimum pH and temperature पे वो most active होते हैं. So option B is correct. 30. Which graph best describe enzyme activity versus temperature? A bill shaped curve जो होता है ये हमारे लिए चूंकि स्ट्रेट नहीं आ सकता, यू शेप पे नहीं हो सकता, सो बिल शेप कर्व जो होता है ये हमारे पास ग्राफ जो है उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है. इसको बिल शेप ग्राफ कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Where does glycolysis take place in the cell? साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोसोल्स के अंदर होता है. 32. What is the end product of glycolysis? पायरुवेट बनाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है. 33. How many ATP molecule are net gain in glycolysis पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल? नेट गेन की बात हुई है तो ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल जिसमें 2 उन्होंने कंज्यूम किए हैं. सो नेट 2 एटीपी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 34. Which molecule is both a substrate and a product in glycolysis? So ATP as a substrate भी यहाँ पे यूज हो रहा है, as a product भी वहां पे यूज हो रहा है. 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं नेट, क्योंकि 4 ATP बनते हैं और 2 ATP वो यूज करता है. 35. How many NADH molecule are produced as per glucose during glycolysis? So 2 NADH2 बनते हैं. So option B is correct. 36. In anaerobic condition, pyruvate is converted into either ethanol or lactic acid. So option B is correct. 37. Which of the following which describe glycolysis? That's an anaerobic process. There's no need of oxygen. It's a common in both aerobic and anaerobic. Option B is correct. 38. Which structure in the male reproductive system is responsible for sperm production? Testes. Option C is correct. 39. What is the role of epididymis in the male reproductive system? It's stored in mature sperms. Epididymis का काम होता है. So option B is correct. 40. Which hormone is primarily responsible for the development of male secondary sexual characteristics? ये testosterone का काम है male के अंदर secondary sexual characteristics. So option B is correct. 41. What is the function of vasa differentia? Transport sperm from the epididymis to the urethra discharge. So option B is correct. 42. Which part of the sperm contain enzyme necessary for fertilization? एक्रोसोम्स के अंदर होते हैं हाइल्यूरोनिडेज और ये गोल्जी बॉडी बनाता है. So option C is correct. 43. The midpiece of a sperm cells contain mini mitochondria. So option C is correct, which help in motility, provide energy. 44. Which of the following is not the function of the male reproductive system? Production of the egg. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 45. व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ लामार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? लामार्क हमें पता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात हुई थी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 46. अकॉर्डिंग टू लामार्क हाउ डू ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ओवर जनरेशन? बाय यूजिंग एंड not using certain organ. Use and disuse theory की बात हुई थी. ऑप्शन B is correct. 47. Which are the following example of support Lamarck theory? Long neck of giraffe evolves due to the overstretching to reach the high leaves. उन्होंने जिराफा पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. 48 पे आते हैं. Which scientist is best known for the opposing Lamarck theory with the concepts of natural selection? ये चार्ल्स डार्विन का आइडिया था. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 49. What is the major criticisms on the Lamarck theory? It lacked experimental support. उनके पास नहीं था. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 50. Lamarck proposed that the traits acquired during an organism life can be passed to offspring. सो ये ऑप्शन उसका गलत आ रहा था. सो ऑप्शन सी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि वो जनरेशन टू द नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर होते हैं. 51. Accordingly to Lamarck, if an animal does not use a particular organ, the organ gradually disappears. हो जाते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 52 पे आते हैं. Lamarck theory is the best described as a evolution by use and disuse organs. So option C is correct. 53. The idea of use and disuse was proposed by Lamarck. So option C is correct. 54. What is the functional unit of kidney? Nephron. Option A is correct. The main function of the kidney is to filter blood and form urine. Option C is correct. 36. Which of the part of the nephron is responsible for ultrafiltration
ग्लूमेरुलस में होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 57 यूरिया इज मेनली फॉर्म इन द लीवर, बनता लीवर में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 58 द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन मेनली अकर इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रिएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। 59 what hormone regulate water absorption in the kidney? Antidiuretic hormones का काम है, which also called vasopressins. 60 what blood vessels bring filtrable blood to the kidney? Renal artery का काम है कि किडनी की तरफ ब्लड ले आए और रीनल वेन जो है उसके लेके जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 61 which of the following is not a part of nephron? Ureter. So option C is correct. 62 which structure carries urine from the kidney to the bladder? Ureter का काम है। ऑप्शन C is correct। 63 which condition result from the failure of the kidney to filter waste? इसको renal failure कहते हैं। So option C is correct. 64 what initiate a nerve impulse in a neuron? Stimulus causing a change in the membrane potentials. So resting membrane potential से action membrane potential में चला जाएगा threshold frequency की वजह से। So option C is correct। 65 which ion are primarily involved in generation of an action potential? चूंकि ये सोडियम पोटाशियम की वजह से इन्वॉल्व होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप इन्वॉल्व होता है। So option B is correct। 66 during depolarization what happens to the neuron membrane? Sodium ion influx होता है। So option D is correct। How many bones are there in human adult skeleton? 206। So option A is correct। 68 which of the following is a part of the exoskeleton skull? So option C is correct। 69 the longest bone of the human body is femur. So option B is correct। 70 the bone of the fingers are called phalanges, इसको कहते हैं। So option D is correct। 71 the rib cage in the human protect which of the following organ? Heart and lungs. Option B is correct। 72 which bone protect the brain? Skull. So option B is correct। 73 which of the following is not the function of the skeleton? Hormone secretion. Option C is correct। 74 the vertebral column consists of how many vertebrae and adult? 26 होते हैं। vertebrae 33 हैं, बोन जो है वो 26 है, क्योंकि लंबर और कोकिस वाले जो है 7 सर्विकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, 5 सेक्रल है और 4 कोकेजल है। सेक्रल और कोकेजल वाले जो है फ्यूज्ड हो जाते हैं। 75 which part of the skeleton included the limbs? Appendicular skeleton. So option C which type of joint is found in the shoulder? Ball and socket joint. So option B is correct। 77 the average length of menstrual cycle in adult female is 28 days. So option B is correct। which of the following hormone play a crucial role in the thickening of the uterine lining and endometrium during proliferation phase? So ये एस्ट्रोजन का काम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 79 ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टिपिकली अकर? इसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 80 इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द कार्पस ल्यूटेम विल degenerate and decreases its hormone production. So option B is correct. Last MCQ है what is the primary function of the luteinizing hormone? So to cause the release of mature egg from the follicle, ovulation हो जाए, ये luteinizing hormone का काम है। Wish you best of luck. See you next time. Allah Hafiz.